सो फाइन, चलो आज सुबह के 4 बजे हुए हैं। अभी मेरी गाड़ी है डबल डेकर एक्सप्रेस जो कि मडगांव से रवाना होगी। पहले ये ट्रेन अभी मानसून चल रहा है इसलिए अभी इसका शेड्यूल 5:30 बजे किया हुआ है। तो पहले इसका टाइम था 6 बजे, तो मुंबई में लगभग 3 या 4 बजे ऐसा पहुँचा। इससे पहले 10 मिनट पहले ये गई है इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस जो कि अभी शायद सुरावली लेफ्ट हुई होगी, और इसके पीछे पीछे नेत्रावती एक्सप्रेस आ रही है जो कि आगे जाके इस ट्रेन को ओवरटेक करेगी मेरे ख्याल से शायद रोहा पे। तो गाइस चलते हैं, अभी 5:30 में, अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी है। चलो मडगांव एसी डबल डेकर एक्सप्रेस जो कि आज फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस ट्रेन में, और जो कि आज इसको WDP3 भी लगा है। जो ये मेरा ड्रीम था पहले भी कि किस टाइम मैं इस ट्रेन के साथ ट्रैवल करूँगा WDP3 के साथ, जो कि आज मेरे इस फेवरेट ट्रेन के साथ लगा हुआ है। तो फिर चलते गाइस, आप सब इस ट्रेन को देख सकते हैं। कम से कम 90% ट्रेन पूरा खाली है, क्योंकि सुबह के 5:30 बजे जब मैंने टिकट निकाला था तो टिकट भी नहीं था अवेलेबल। सिर्फ अवेलेबल होता है रत्नागिरी आगे, मतलब चिपलून जाके आगे, मतलब फुल हो जाएगी। आज फुल एसी चल रही है और ऊपर से बारिश का मौसम है। 5:30 बज गए हैं, अभी तक ट्रेन मतलब डिपार्ट नहीं हुई है। शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है लोगों में। देखते हैं कितनी टाइम और रुकती है यहाँ पे। सुबह भी हो चुकी है और पीछे पीछे नेत्रावती एक्सप्रेस भी आ रही है। शायद मैं ओवरटेक मारेगी या ये हमारी ट्रेन पहले चलेगी, कुछ पता नहीं है। सुबह के 6 बजे है, अभी तक ट्रेन हमारी डिपार्ट नहीं हुई है। और अभी मैंने गार्ड से कुछ बात की, वो उन्होंने बोला कि लोगों को प्रॉब्लम है, तो अभी दूसरा लोगो लगेगा। तो शायद वो मेरे पीछे आ रहा है, वही ईरोड का लोगो है। WDP244011 डबल फ्यूल कैब। एक घंटा लेट है, 6:30 बज गए और अभी आप ईरोड का अल्को लग गया। और मेरे बाजू में है लेफ्ट साइड नेत्रावती एक्सप्रेस। पता नहीं अभी कौन सी ट्रेन चलेगी, हमारे वाली चलेगी या नेत्रावती एक्सप्रेस, देखते हैं। सो नेत्रावती को भी छोड़ दिया हमारे से पहले। 1 घंटा और 10 मिनट और लेट हो चुकी है डबल डेकर एक्सप्रेस। शायद पता नहीं कब डिपार्ट होगी। जो कि अभी 1.5 घंटा लेट है।
भाई होता है तो आ जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। हाँ? मडगाव सावंतवाडी दिवा। काजीपेट WDG 470145 ग्रीन से DCN 12754। फुल स्मोकिंग। पानी की वजह से नहीं ले रहा है। अरे बाप रे। बहुत पानी।
शताब्दी आ रही है फुल एमपीएस में, काफ़ी 2 घंटा लेट है डबल डेकर एक्सप्रेस। शायद मुंबई आज 2 या 3 घंटा लेके आज जाने में। लाइन में खड़ी है, पता नहीं सामने से क्या आ रहा है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, ये बीसी ने आ रही है या कोई एक्सप्रेस ट्रेन, कुछ मालूम नहीं। ये अच्छा व्यू है यहाँ पर लोकेशन एलिफेंट के लिए। काजीपेट WDG 4127।
एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 पे। हमारी गाड़ी 2 पे आई है। तो मेरी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खेड़, जो कि 2 घंटा लेट है। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है वो मंगला लक्षद्वीप है, ये आप देख सकते हो।